Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How do you do? I hope you are all fine. That's great. So we will go straight forward on our lesson. Content information subject biology grade pre-9 and unit numbers for cells and tissues. Our topic is microscopy and the emergence of cell theory. Objectives are microscopy and the emergence of cell theory, magnification and resolution, light microscope, and at the end, electron microscope. Microscopy and the emergence of cell theory. Microscopy. The use of a microscope is known as microscopy. Actually, when we are using microscope, so it is called a microscopy. It is terminology. The first compound microscope was developed by Zacharias Janssen. इसकी पिक्चर दिखाई गई है जैनसन साहब की. ये कौन थे? ये हॉलैंड से थे. इन हॉलैंड 1595. इट वाज सिंपली अ ट्यूब विच लेंसेज एट ईच एंड. दोनों एंड पर इसके लेंसेज लगे होंगे ट्यूब के. इट्स मैग्निफिकेशन रेंजेस 3x to 9x. इसकी मैग्निफिकेशन रेंज जो होगी इनलार्जमेंट की एबिलिटी जो इस माइक्रोस्कोप की थी जो 1595 में डेवलप की गई 3x to 9x 3 टाइम टू 9 टाइम ग्रेटर करती थी. एक इमेज को लार्ज कर देती थी. Next two important terms are used in microscopy: magnification and the resolution, your resolving power. Magnification. Magnification is the increase in apparent size. Apparent means ज़ाहरी तौर पर जो साइज होता है किसी भी चीज़ का of an object, and it is an important factor in the microscopy. Resolving power or resolution. Resolving power or resolution is a measure of the clarity of an image. It is a minimum distance at which two objects can be seen as separate objects. जैसे कि उनको सेपरेट करके उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है दोनों में. इसी को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन. अगर हम दो इमेज के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर सके, उन्हें आइडेंटिफाई कर सके, तो हम कहते हैं कि इसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ह्यूमन नेक्ड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 points which are at least 0.1 millimeter apart. This is known as the resolution of a human eye. If we place two objects 0.05 millimeter apart, human eye would not be able to differentiate. अगर 0.1 मिलीमीटर से उसका साइज छोटा होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस इतना नहीं होगा, ठीक है, तो वो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ सकता. Human eye would not be able to differentiate them as two separate objects. Magnification and resolution can be increased with the help of a lenses. हम lenses अप्लाई करके इसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं. As we discussed in last slide, there is a resolution range is a 3x to 9x. Light microscope. A light microscope works by passing visible light through a specimen. Specimen एक सैंपल है आपके पास जिसको आप ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करना चाहते हैं. It uses two glass lenses. One lens produces an enlarged image of the specimen and the second lens magnifies the image and projects it into the viewer's eye or onto the photographic film. A photograph taken through a microscope is called micrograph. जो फोटोग्राफ लिया जाएगा माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इसे कहते हैं माइक्रोग्राफ. बॉटम में आपके पास इनिशियल एंशियंट टाइम की लाइट माइक्रोस्कोप है, फिर मिडल स्टैंडर्ड एज की, और एट द एंड द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन
लाइट माइक्रोस्कोप आपके पास मौजूद है। इसके दो स्पेसिमेंट्स आपको शो करवाए जा रहे हैं। लाइट माइक्रोस्कोप व्यू अमीबा एक तरफ दिया गया है, और जो कि यूनिसेलुलर वो जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनकी पूरी लाइफ की एक्टिविटीज़ विद इन अ सिंगल सेल रहती हैं। और दूसरी राइट साइड पर आपके पास एलजी मौजूद है। मज़ीद एक्सप्लेनेशन में जाना चाहेंगे हम। व्हेन वी सी अ माइक्रोग्राफ ऑन द पेज ऑफ अ बुक, वी सी सम वर्ड्स लाइक LM109X प्रिंटेड अलॉन्ग द एज ऑफ द माइक्रोग्राफ। हर माइक्रोग्राफ पहले ही बता चुके हैं, वो इमेज होता है जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लेते हैं, उसे माइक्रोग्राफ कहते हैं। तो उस पर एक कोड लिखा होगा LM109X। It tells us that the micrograph was taken through a light microscope and that the image has been magnified 109 times। 109 गुना बड़ा करके वो इमेज आपको दिखाया जा रहा है उस फोटोग्राफ में। मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर का इमेज है तो ये बन जाएगा 109 सेंटीमीटर। A light microscope can magnify object only about 1500 times without causing blurriness. Its magnification is a 1500x. Its resolving power is 0.2 micrometer, and the 1 micrometer is equal to 1 or 1000 millimeter, 1 part of a 1000. In other words, the light microscope cannot resolve objects smaller than 0.2 micrometer. It is about the size of a smallest bacterium. The image of the bacterium can be magnified many times, but light microscope cannot show the details of an internal structure. तो बैक्टीरियम को शो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक और माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ेगी जो कि मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। It is the most advanced form of a microscope in electron microscope, and the lens are placed in a vacuum chamber. वैक्यूम एम्प्टी स्पेस को कहेंगे, विदाउट एयर होगी वो। एंड द चैम्बर इज अ कंटेनर, खाना, खाली जगह। एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड द मेक इमेज electromagnetic lenses enlarge and the focus the image into a screen or a photographic film. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं, ठीक है, खासी बड़ी होती है और कॉस्टली भी। मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ मच हायर रिजॉल्विंग पावर दैन अ लाइट माइक्रोस्कोप। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 nanometer, and the 1 nanometer is equal to 1 millionth millimeter part. It is a 1000-fold improvements over light microscope. Electron microscope can magnify objects about 250,000 times, 3x to 9x. Then we will shift on to the 1500x and now to 50,000x. Under the special condition, electron microscope can detect individual atoms, cells, organelles, and even molecules like DNA and protein are much larger than single atoms. Biologists use two types of electron microscope: transmission electron microscope (TEM) and scanning electron microscope (SEM). So, transmission electron microscope. In transmission electron microscope, electrons are transmitted through the specimens. Transmission electron microscope is used to study the internal cell structure. Transmission electron microscope on the left side, you can see that, and the view of an animal cell on the right side. Scanning electron microscope. In SEM, electrons are reflected from the metal coated surface. Metal की तह चढ़ी होती है। SEM is used to study the structure of a cell surfaces. Cell की surfaces को देखने के लिए
SEM on the left side, you can see that a view of a mosquito, head and the eye right through it, और on the right side आपको mosquitoes का head और एक eye दिखाई गई है. That's it, student.